Okay, so we are starting with HRD, Human Resources Development and Management Information System (MIS). What is human resources development? The important what we are going to see in the human resources development will be importance and the scope of HRD, that is human resources development, right? Supervisor's role as trainee and motivators, professional ethics in engineering. Now, what are the importance and the scope of HRA? Human resource development can be defined as a learning process in which organization members acquire KESA. What is KESA? Knowledge, experience, skills, and attitudes. KESA, that's the way need in order to perform their job well. तो हर एक जगह पर क्या होता है कि हर कोई कंपनी है हमारी, राइट? तो कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको डेवलप करना पड़ता है। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको कंटिन्यूसली डेवलप होना पड़ता है। अगर वो यहाँ पर कहीं पर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है तो कंपनी का जो खुद का डेवलपमेंट है वो भी स्टॉप हो जाएगा। डेवलपमेंट मॉडल has KESA, KESA, right? Now, what is KESA? First, to gain the knowledge. Now, to gain the knowledge is lifelong experience, right? आप आज भी नॉलेज गेन कर रहे हो, कल भी करो, परसों भी करो और करते रहो। तो नॉलेज इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। आप हमेशा उसको जितना भी नॉलेज गेन करोगे उतना कम ही रहेगा वो। फिर एक्सपीरियंसेस for different type of job we don't have different experiences, and to get that experience it is the role from the HRD, where the human resources development gives you the experience towards the skills that you are not having. They give you the experience to the new work, new workplace, new environment, skills. Now you have to develop the skills such as, for example, if there is a person who is having an age of 40, he haven't operated the laptop, computer, desktop as we are operating right now today, then he requires to acquire that skills. So the upgradation of soft skill is one of the part. Now secondary, for example, if you are not doing an SketchUp, but you know the AutoCAD, then you upgrade your skill and know you came to know what is SketchUp, how to operate that, how to use it, and that will be a upgradation of your skill. So upgradation of skill can be soft skill, it can be a hard one also. It could be a physical day-to-day life skills. Attitudes. Now, how you see the attitude, what is your attitude towards your work? How you see the task? How you think that it is achievable? That is your attitude towards the task. Then, towards your job, what is your attitude? Is it positive? It is negative? It's moderate one. How energetic you feel to your task? So, what kind of attitude should be used by you to the customer, by you to the management, by you to the entire organization? So, to develop any human, and this four criteria is highly required or requested by HRD, and that is the scope of the human resource development. Also, note down this.
Done with this? No, sir. सर, एक एटीट्यूड को फिर से एक्सप्लेन करते ना। Yes. एटीट्यूड को सर, हाँ, एटीट्यूड्स। एक बार एक्सप्लेन फिर से कहते ना सर। हाँ, एटीट्यूड्स जो है वो इट कैन मतलब आपका जो जॉब के ऊपर एटीट्यूड रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कुछ दिया काम करने के लिए, आपका एटीट्यूड दो टाइप का हो सकता है। एक एटीट्यूड वाला आदमी ये सोचेगा, अरे यार क्या सर ने काम अभी अभी सुबह सुबह दे दिया, अभी मेरे को ये करना पड़ेगा, चल नहीं करना है। दैट इज एटीट्यूड नंबर वन। एटीट्यूड टू क्या होगा, ओके सर ने अभी दे दिया, ये तो लास्ट है ना असाइनमेंट, चलो फटाक से कर देते हैं तो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज अ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बिल्डअप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह के लिए। दूसरा, एटीट्यूड एंड अप्रोच टूवर्ड्स योर कस्टमर एंड क्लाइंट ऑल्सो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड। else attitude comes at every point. Now when we talk about a client, right, there are two kind of approach towards the client. When you are inside the company, once you think that अगर इसको परचेस करना है तो करेगा, मेरे को कहाँ पर सैलरी कुछ ज़्यादा मिलने वाली है, राइट। और दूसरा अप्रोच ये रहता है कि ओह, इफ दिस पर्सन, इफ आवर डील्स गेट डन विद दिस पर्सन, then the company will grow, and if company will grow, we will automatically grow. So this is a different approach, right? तो ये जो एटीट्यूड्स है ना उसको मेंटेन करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। क्लियर संतोष? यस सर, क्लियर सर। ओके, now we see the knowledge versus the experience and the creativity, right? If we give you a knowledge, if anyone gives you a knowledge, what it is scattered dots. That are the scattered dots. Why scattered dots? ये कुछ अलग अलग डॉट्स है। स्कैटर्ड डॉट्स मतलब कुछ अलग अलग पड़ा है कहीं पर कुछ भी, तो उसको लिंक अप करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। when you want to link up this, you required experience and you required a creativity when you do this. So when you lead to the creativity, it happens when you lead to the creativity, it happens that everything grows together. It rises together because the things has fallen into the places and you know how to connect and how to place the things. सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, अगर आपके पास नॉलेज गेन हुआ है तो ये नॉलेज अलग अलग फील्ड का अलग अलग तरह से है आपके पास, फिर इसको लिंकअप कीजिए और उसको क्रिएटिविटी के अंदर लिंकअप कीजिए। एक्सपीरियंस से आप लिंकअप कर पाओगे और क्रिएटिविटी से आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिंकअप करके एक्सपांड कर पाओगे। Right. Now, what are the importance of HRD, that is human resources development? Human resources development is seen as a pivotal component of the HRM function, human resources management functions, for following reasons. HRM उसका मतलब human resources management functions, the strategic investment released in the organization growth and survival of over time.
It makes the people more creative, innovative, and thus able to develop an idea that can take the organization forward. नाउ एचआरडी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो एचआरडी जो है ना वो ग्रोथ ओवर टाइम के साथ, ग्रोथ और सर्वाइवल विथ टाइम, वो आपका जो है वो उसको तय करता है कि ये ग्रोथ होगा। इट मेक्स इट सिक्योर, ये सिक्योर करता है किसको? तो आपके ग्रोथ को और सर्वाइवल को। नाउ व्हाई डू यू नो, इन majority of the companies out of India, which is not in India, out of India, they appoint a CEO who is simply the employee of the company. They appoint that person as a CEO, not the family member who owns the business. यहाँ पर क्या होता है कि जो पिता है तो बच्चा जो है उसका वही बिजनेस संभालेगा। वैसा नहीं होता है। बिजनेस संभालने के लिए वो किसी को हायर करते हैं। वो किसको हायर करते हैं? तो वो बंदे को जो उसकी समझ रखता है। फिर वो उसका बेटा हो तो वो अलग बात है, ना हो तो भी अलग बात है। नाउ कैन आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ Sundar Pichai, right? Is the CEO of Google. Now what's the deal with him? उसके साथ क्या है? तो वो एक सिंपली एम्प्लॉय था गूगल का। उसके अंदर एक इंसिडेंस हुआ जहां पर सुंदर पिचाई ने बोला कि अगर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर हमारा पेज एज अ डिफ़ॉल्ट पेज नहीं दिखा रहा है तो हम अपना नया ब्राउज़र शुरू करेंगे, और उसने शुरू कर दिया ब्राउज़र एज क्रोम। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उसका जो इनोवेटिव आइडिया था उसको डेवलप कर उसको रखा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को वो डेवलप कर रहा था। वो इनोवेटिव भी था और क्रिएटिव भी था। अपना खुद का ब्राउज़र है तो पहले कौन खुलेगा? पहले गूगल खुलेगा। तो वो क्रिएटिविटी उसने दिया है, वो इनोवेशन उसने दिया है, और इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी। इट इज ट्रिगरिंग मशीन फॉर मैकेनिज्म फॉर प्रोग्रेशन ऑफ अदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये दूसरा मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का जो प्रोग्राम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होगा डेवलप, उसके लिए ये ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है। लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रोडक्टिविटी इन सेंस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। मतलब मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम को वो अच्छी तरह से कर पाए और इम्प्रूव्ड वे में, ठीक से, अच्छा और प्रोडक्टिव कर पाए। प्रोडक्टिव का मतलब मैं काम तो 8 घंटे करता हूँ, लेकिन अच्छा काम कितने क्या किया 8 घंटे के अंदर? 8 घंटे के अंदर में 8 घंटे का ही प्रोडक्टिव काम किया है तो इट इज गुड। लेकिन वो उतना नहीं कर रहा हूँ तो प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, जो भी है वो। राइट? 8 घंटे बैठने का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटा काम ही किया है। 1 घंटा आप लेक्चर पढ़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्टिविटी 1 घंटे का हुआ ही। राइट? ओके, नोट डाउन दिस।
Okay, then moving forward with some more importance. नो सर, पेंडिंग। Huh? लिखना सर बाकी है अभी 2 पॉइंट्स। नो प्रॉब्लम, वो बाद में फिर लिख लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरडी। अभी थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंस देखते हैं तो क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय है, बोथ नया कोई है या एग्जिस्टिंग कोई है, तो उसको सेटल करने के लिए हाउ टू सेटल वो देखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड, राइट। तो वो काम आता है, मतलब ये एक इसका इम्पोर्टेंस है। फिर इट्स क्रिएट अ प्राइमरी लेबर मार्केट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जितना अच्छा एचआरडी होगा उतना ही ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कंपनी के लिए हमें मिलेंगे। तो ये जो है ना, ये प्राइमरी लेबर मार्केट क्रिएट करता है हमारे लिए। रिलीजेस द एम्प्लॉय पोटेंशियल। इसका मतलब कि हर एक एम्प्लॉय के पास अपना एक पोटेंशियल होता है, लेकिन वो पोटेंशियल को कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं नहीं, तू डोंट यू डोंट यूज योर माइंड एंड यू डोंट यूज योर पोटेंशियल। अगर उसका पोटेंशियल वहां पर बाहर नहीं आता, हमें नहीं पता कि ये आदमी कहाँ से क्या काम के लिए अच्छा है और किस काम के लिए ये आदमी नहीं चलेगा, देन वी कैन नेवर ग्रो अवर ऑर्गेनाइजेशन। नया जॉब एंड टास्क जो है इमर्ज, एंड new jobs and tasks emerged and some do the changes that how नया कोई जॉब आया है तो उसको कैसे वर्कआउट करना है वो एक्सप्लेन करना उसका काम रहेगा। प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, लॉयल्टी, क्वालिटी एंड कमिटी कमिटमेंट। तो उसको प्रमोट क्या करेंगे ये लोग? प्रमोट करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को, रॉयल्टी को। रॉयल्टी और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? तो हर एक आदमी को अपना कुछ रॉयल्टी रहता है, मतलब लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क को ये लोग डेवलप करेंगे, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये डेवलप करते हैं, और कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ये डेवलप होना चाहिए। नाउ द स्कोप ऑफ एचआरडी। The HRD function involves the following HR activities. First, it's employee orientation. अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको पूरा कंपनी का सिस्टम समझाइए कि ये कंपनी का सिस्टम ये है। उसको जो टास्क देना है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। ट्रेनिंग कैसे हो रहा है इसका। दूसरा होगा उसको टाइमिंग शेड्यूलिंग सब बताइए। लीव्स कैसे मिलता है वो बताइए। उसको किसको ऑर्डर फॉलो करना है, उसको कैसे किसको मीट करना है, किससे काम करना है और किसको फॉलो अप देना है, ये इसको पता होना चाहिए। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने का काम एचआरडी डिपार्टमेंट से रहेगा, एचआर डिपार्टमेंट से होता है। उसको डेवलप करते रहो, उसको ट्रेनिंग देते रहो। कैरियर मैनेजमेंट है, राइट। दैट हाउ वुड ही मैनेज हिज कैरियर। उसको कहाँ पर कैसे वर्कआउट करना है, उसको कौन से नए स्किल्स सीखने चाहिए जिससे वो प्रमोट हो पाएगा कंपनी के अंदर। तो ये उसको सीखना है, उसको बताना है हमें कि वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग्स, इफ यू कैन प्रोवाइड अस दिस देन वी कैन प्रोवाइड यू द इंक्रीमेंट। Management development, how to manage his day-to-day life work, how to manage his day-to-day life stuffs. That is a scope of HRD. HRD will give these things to do. ये इतना ही काम करेगा HRD। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए एज अ स्कोप।
complete, sir. Okay, then we'll move to the role of the HRD सुपरवाइजर। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सुपरवाइजर है, उसको देखना क्या है, फर्स्ट उसको गोल सेटअप करना है, कंपनी गोल्स को सेटअप करने का काम उसे करना पड़ेगा। वो इफेक्टिव बिहेवियर्स को डेमोस्ट्रेट करेगा, हाउ डेमोस्ट्रेशन करेगा उसको कि इफेक्टिवली आप कैसे बिहेव करना है टूवर्ड्स योर जॉब और टूवर्ड्स योर बॉस, टूवर्ड्स द मैनेजमेंट और टूवर्ड्स योर क्लाइंट। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए हर एक को अलग अलग अथॉरिटी मिला हुआ होता है। तो अगर किसी चीज के लिए आपको डिसीजन चाहिए या आपको खुद को लेना है तो कौन सा एसओपी फॉलो करना पड़ेगा? वो एसओपी अगर फॉलो हो जाएगा तो देन इट्स ओके, राइट। फिर मैनेजिंग चेंजेस, अगर कहीं पर कुछ चेंजेस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस रहता है, क्यों? क्योंकि टाइम जब चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है, इसके हिसाब से सब कुछ चेंज भी होता है। तो उस चेंज को इफेक्टिवली एम्प्लॉय को पास ओवर करना है, मतलब हर एक स्टाफ मेंबर जो है उसको दिखाना पड़ेगा कि ये चेंज जो है हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं, तो इस चेंज का अफेक्ट आपको क्या होगा और कैसे होगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम, मतलब आप आ रहे हो, मैं बोला कि व्हेन यू आर कमिंग टू योर जॉब प्लेस फ्रॉम 10 टू एग्जांपल 10 टू 8 और 10 टू 6 और 10 टू 5 वॉट एवर, राइट। देन व्हाट यू विल डू, you are supposed to do your work in this time, and if you are not able to complete your task in that time, then what are the priority things that you are supposed to change? उसको आप इफेक्टिवली टाइम के अंदर कैसे कर पाओगे? वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसको सिखाना है नए एम्प्लॉय को, या जो भी पुराना एम्प्लॉय है उसको प्रोडक्टिव वर्कआउट नहीं हो रहा है तो। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, बात कैसे करना है, किसके साथ कैसे अप्रोच करना है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। इफेक्टिव मीटिंग स्किल्स, मीटिंग्स के अंदर कैसे इफेक्टिवली मिलना है, कहीं पर बाहर किसी लोगों से मिलना है तो मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, वो मीटिंग को इफेक्टिव कैसे करना है, वहां पर बातचीत कैसे करना है, तो ये काम उसका होगा। फिर मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए कि भाई ये काम ठीक से हो जाएगा हमारा, हम लोग साथ में करते हैं, तो ये मोटिवेशन रहता है। एनवायरनमेंट बिल्डअप करना पड़ता है मोटिवेशन के लिए, राइट। डेलीगेशंस, कहीं पर जाना है, कहीं पर हमें रिप्रेजेंट करना है कंपनी को, तो कैसे करेंगे? और ट्रेनिंग, एट द एंड ये ट्रेनिंग देना हमें पड़ेगा, वी नीड टू गिव द ट्रेनिंग फॉर दिस। नाउ कम विद द एथिक्स। आपका इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका अपना एक एथिक्स होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये कंपनी के लिए क्या राइट है, कंपनी के लिए क्या रॉन्ग है, क्या कंपनी कर पाएगी इसके अंदर और इस ये चीज़ें कंपनी नहीं करेगी। तो एम्प्लॉय को अपना खुद का इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स पता होना चाहिए कि भाई हम ये काम नहीं करते, ऐसा कुछ गलत काम आ रहा है तो हम नहीं करते, दिस इज नॉट अवर एथिक्स, आप कहीं और से करवा लीजिए। एथिक हैज टू बी विथ व्हाट माय फीलिंग टेल्स मी, राइट और रॉन्ग। हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बोला आपको कॉन्ट्रैक्ट करके भाई एक काम कीजिए, हम लोग यहाँ पर अल्ट्राटेक नहीं श्री गणेश सीमेंट यूज कर लेंगे, या एक्स वाई जेड कोई भी सीमेंट एक्स वाई जेड सीमेंट यूज कर लेंगे, तो वो जो है वो एथिकल नहीं है, क्योंकि ये डील होता है किसके साथ, डील्स विद ह्यूमन लाइफ। सो एथिक हैज टू बी सीन। the the truth is something
that what we understand it is true, or truth is something that has an approach towards our own gut feeling. Ethics should be always in the prime towards the country. हमारा कंट्री जो है उसको अल्टीमेटली प्रॉब्लम ना हो, वैसे एथिकल डिसीजन हमारे होने चाहिए. इट शुड बी इन द फेवर ऑफ कंट्री, क्योंकि वो कंट्री है जो हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर है ड्यू टू दिस कंट्री, और ये कंट्री है जो हमें ग्रो करता है, करवाता है, हमारा ग्रोथ करता है. These are some values, these are some formulations or memes that are provided in the internet, that it's a square root of your common sense and propaganda, lies, and media conversation. Now, I had a propaganda that is shown in the media. Media is telling lie about something, but we might have our own common sense that okay, no, no, this is not right, this is truth. So we have to use our brain. How much we use our brain will be equal to the truth. Ethics has many other names. It can be principles, honesty, right, fairness, right, responsibilities, conscience, choice, honor, value, integrity, moral. ये आप कोई भी नाम ले लो इसके अंदर, दैट इज योर एथिक्स. आप डर के नहीं कर रहे हो गलत काम, या रिस्पॉन्सिबल होके नहीं कर रहे हो, या ऑनेस्ट होके नहीं कर रहे हो, या आपको वैल्यू अच्छा है पता है, या इंटीग्रिटी रखना है, लेकिन वो एथिक्स है हमारा. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एथिक्स होना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू इट्स एंड. एक इंजीनियरिंग एथिक्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द इंजीनियरिंग एथिक्स? Engineering as a social experimentations, हमारा सोशली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंजीनियर बनता है. क्या होता है सोशल? दैट इन सोसाइटी वी प्रोवाइड एन वेरी गुड फ्रेंडली एनवायरनमेंट. इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टीज. हम जहाँ पर कुछ कर रहे हैं तो वो सेफ्टी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. फॉर एग्जाम्पल, जिसने कोरोना वायरस बनाया उसने लैब के बाहर भेज दिया, तो वो सेफ्टी से खेल लिया उसने, वहां पर सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा उसने. तो वो जो है, वो हमारा फर्स्ट एंड प्राइम होता है कि हमें सेफ्टी रखना पड़ेगा. अगर हम बिल्डिंग प्रोवाइड कर बना रहे हैं तो हम सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं. हम इक्विपमेंट यूज करते हैं जो सेफ्टी के लिए यूज हो सकते हैं. बेल्ट्स वगैरह सब कुछ हम यूज करते हैं, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट्स. तो ह्यूमन को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, और वो ह्यूमन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी रहता है, इसलिए हम उसकी सेफ्टी को मेन प्रोविजन में रखते हैं. एथिकल डायलेमास, मतलब आपका इंटरनल एथिक्स कोई भी कंपनी का क्या रहेगा? प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट्स. हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल एक साइट है उसके ऊपर 50 ट्रीज थे, हमने 50 का 50 उड़ा दिया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा बनता है कि वी ग्रो इट अगेन. हमें रिक्वायर्ड था तो हमने निकाला, वो ठीक है, लेकिन फिर अब उससे ज्यादा कुछ ग्रो कर दो. 50 निकाला है तो 100 ग्रो कर दो, 75 को ग्रो कर दो. राइट्स ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का खुद का चॉइस होता है कि ये काम करना है या नहीं करना है. वो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर हमें कहीं पर प्रेशर कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता कभी भी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज क्या रहती है? एज अ एम्प्लॉयज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स द कंपनी? टेक्निकल डेवलपमेंट को देखना है, माइक्रो मैक्रो इश्यूज को देखते हैं, और मोरल वैल्यूज को देखते हैं एज अ इंजीनियर एथिक्स.
Now this is MIS, Management Information System. What contains we are going to see is what are the purpose, what is the need, what is the physical model of MIS, and what is the applications. Now, management information system is a huge part of project management information system where you get the every update that what is going on at a site and what is about to go in the near future on site. So when we define this, MIS is defined as a system which provides an information support for the decision making in organization. तो ये जो है वो क्या है एम आई एस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको किसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो बोलेंगे इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट किसी डिसीजन को लेना है तो डिसीजन लेने के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो right. MIS is defined as an integrated system of men and machines for providing information to the operation, management, and decision making functions in organization. Note down this definition.
ओके, तो अगर मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये समझने लायक चीज है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एमआईएस को क्या क्या कहते बोला, मतलब एमआईएस को क्या इस ये क्यों है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, आपको इंफॉर्मेशन मिला है कि साइट के ऊपर इतना प्रोग्रेस हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नाउ वी रिक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, क्योंकि हमें प्रोग्रेस जो है इसके आगे बढ़ाना है, तो हमें ये इक्विपमेंट अभी चाहिए होगा, या हमें ये मैन पावर रिक्वायर्ड होगा, या कि हमें इतना अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होगा आगे काम करने के लिए, राइट। तो जब रिक्वायरमेंट की बात होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो वो हमें पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये चीजें इस तरह से है, पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसको डिसीजन बहुत इफेक्टिव वे से कर पाएंगे, राइट। वो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है ये एमआईएस जो है, अगेन वो ह्यूमन और मशीन दोनों का आउटपुट जो है उसको कंबाइन करके एक ऑप्टिमम पाथ आपको देगा, मतलब एक छोटे से छोटा रास्ता देगा, या डिसीजन लेने के लिए एक कंक्लूजन की तरफ आपको ले जाएगा। वो मशीन से भी डेटा आता है, वो ह्यूमन से भी आता है, उसको हम कंपाइल करके कंक्लूड करेंगे। A project manager has to take decision with two main challenges. First, a project manager has to take a quick decision, or else there are changes of the project being taken over by his competitor. The liberalization and the globalization in which the organization are required to compete globally has a feature enhance the necessity for such a system. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो क्विक डिसीजन नहीं लेगा तो उसका कॉम्पिटिटर डिसीजन लेकर ये ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर वो आगे चला जाएगा, और यहाँ पर जो डिसीजन लेता है वही आगे बढ़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, उसके अंदर कहीं पर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगर वो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाए तो बहुत सारा काम जल्दी से हो जाता है, राइट। सेकेंड, इंफॉर्मेशन इज डबलिंग अप एवरी 2 and 3 years। इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो आज फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो हर 3 साल के बाद 10 इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। So what happens? The manager has to produce a large volumetric data, filling which he may end up taking a strong decision that may prove very costly to the company. जितना डिले करोगे उतना डेटा ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा डेटा मिलेगा उसके ऊपर जब आप डिसीजन लेते हो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन रॉन्ग मिले हमें। Hence, the management information system has proved to be the one of the most important in the day of business environment. आज के दिन के अंदर डेटा एनालिसिस जो है वो सबसे बूमिंग इसीलिए है। क्यों? क्योंकि वो डेटा एनालिसिस, इसका मतलब इंफॉर्मेशन एनालिसिस जो है वो हमें आउटकम देगा। Key advantage of effective use of MIS, इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम यूज करेंगे तो उसका एडवांटेज हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, व्हाट विल बी आवर मैक्सिमम एडवांटेज, अगर ये देखें तो फर्स्ट, मैनेजमेंट कैन गेट एन ओवरव्यू ऑफ एंटायर ऑपरेशन। मैनेजमेंट को पूरे का पूरा जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसका ओवरव्यू मिलता ही रहेगा। मैनेजर हैज एबिलिटी टू गेट अ फीडबैक्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। ये जो परफॉर्मेंस जो कम पूरे क्लस्टर, कंपनी का पूरा क्लस्टर जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो उसको अपग्रेड होता ही रहेगा, उसका फीडबैक उसको मिलता ही रहेगा कि क्या अपडेट है, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, परफॉर्मेंस कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है,
तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन से मैनेजर को बेनिफिट होता रहता है फीडबैक लेने के लिए और परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स बाय सीइंग व्हाट वर्क एंड व्हाट इजंट। इसके ऊपर जब हम एनालिसिस करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो हमें कुछ डिसीजन लेना है, कोई बेनिफिशियल डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने कुछ ट्रायल किया था, ट्रायल का डेटा अगर अच्छा आया है तो हम बेनिफिट जो है उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, और जो अच्छा नहीं आ रहा है उसको हम वहीं पर कैंसिल कर पाएंगे कि भाई नहीं, ये हमने ट्राई किया था, ये वर्कआउट नहीं कर रहा, इसको कैंसिल कर दीजिए। Right. Manager can compare the results to plan the performance. He can plan everything by comparing the results. तो वो इसके मतलब अपने अपने हिसाब से नहीं करेगा प्लानिंग, वो इंफॉर्मेशन जो उसको मिल रहा है उसके हिसाब से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस को, स्ट्रेंथ जो है उसको वो एक्सप्लोर करेगा, और वीकनेस जो है उसको ओवरकम करने के लिए मेहनत करेगा। To work with plan and performance. Companies can drive workflow improvement that results in the better alignment of business process to the customer needs. तो ये क्या है, कंपनीज को अपना वर्कफ्लो जो है वो इम्पोर्टेंटली ड्रिवन करना है रिजल्ट्स को अच्छा लेने के लिए, कस्टमर नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो डेटा एनालिसिस से करेगा। Many business decisions are moved out of an upper management to the level of the organization that is closer to where the knowledge and experience lie. तो कहीं पर आपका डिसीजन नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो डायरेक्टली अपर मैनेजमेंट के पास पहुंच सकता है इस सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि वो लोग भी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो जो है वहां पर आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, आई थिंक वी शुड कीप इट फॉर दिस मच टुडे। We have short of 5 slides remaining. That's it. We'll continue in our next lecture. Okay. Okay, you can give your attendance and then you can